Welcome to my YouTube channel Study Point 11. Dear viewers, hope you all are fine. आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक हमारा क्या रहेगा डिस्कशन के लिए, वो है वॉइस। और इस वॉइस में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है और पेसिव वॉइस क्या होता है। इससे पहले आपको ज़रूरी जानना होगा कि वर्ब क्या होता है, क्योंकि ये जो वॉइस है इसमें सारा वर्ब का खेल होता है। वर्ब आपको समझ आ रही, आपको वही वर्ब चेंज करना होगा एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में। ठीक है, पहले आपको वर्ब समझना है, वर्ब होता है क्या है। वर्ब हम डिफिनेशन अगर हम देखेंगे, बोला जाता है वर्ब जो है, वर्ब इज़ अ वर्ड विच शो सम which expresses some action, feelings, existence and the state of being। ये चीज़ हमें ये दिखा रही है। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, some actions एक्सप्रेस कर रही है, या feelings या existence या state of being ये दिखा रहा है। एग्जाम्पल्स आगे मैं दूंगा तो इससे आप और ज़्यादा समझेंगे। एक्शंस जैसे राइट, लिखना, एक्टिविटी। ठीक है, ईट, प्ले, डांस, these words represent that action words। ये verbs होते हैं सारे। ठीक है, state of being, I like to watch a television, I like to meet my friend। like जो है, meet भी friend है, like भी friend है, like भी verb है, meet भी verb है, but like जो है ये state of being दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जिस्टेंस भी है, फीलिंग्स भी है, ये चीज़ डिस्कस कर रही है, एक्सप्रेस कर रहा है वर्ब। इस वर्ब अगर देखेंगे ना, इस वर्ब असल में जो इसके दो काइंड्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफिनाइट और नॉन फाइनाइट हम बोल सकते हैं इसको। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो लिमिटेड हो। फाइनाइट इज़ एक्चुअली लिमिटेड बाय द नंबर, इट इज़ लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट। ये या किसी पर्सन से लिमिट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ आई राइट ए लेटर, चिट्ठी लिखता कौन है, मैं। सो द लेटर इज राइट इज limited by the subject। who is subject here? I am subject here। तो इस सेंटेंस पे अगर मैं लिख रहा हूँ he plays a game, who plays a game? There is someone who plays a game। तो so the verb is limited by the subject। Similarly here I mean to say that जो फाइनाइट है, फाइनाइट में वर्ब जो होता है ये लिमिटेड होता है बाय सब्जेक्ट। किससे? सब्जेक्ट से। अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करेंगे, नॉन फाइनाइट बोला जाता है विच इज़ नॉट लिमिटेड बाय द नंबर और बाय द सब्जेक्ट और बाय द पर्सन हम बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पे बोला है जनरली, it means they are not limited by the number। suppose how I say to error is human, it means to error it is without the subject। so it is generally I am just telling to everyone here। मैं यहाँ सबसे मुखातिब होकर कहता हूँ। ठीक है, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द नंबर, इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एन इनफिनाइट। ये होता है इनफिनाइट, ये होता है नॉन फाइनाइट। समझ आ रही बात। फिर इसके अगर हम फाइनाइट या इनफिनाइट की बात करेंगे, इसमें भी सबऑर्डिनेट्स हैं, बट हम ज़्यादातर देखेंगे फाइनाइट के भी तीन टाइप है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और है ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव मैं इससे पहले भी अर्लियर वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ट्रांजिटिव वो होता है विच कैरीज इन विच देयर इज सब्जेक्ट, इन विच एक्शन पासिस ऑन एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे एक्शन जो होती है पास होती हैं ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, like action passes on and writes, there is someone who writes a letter and it is the action passes on an object, जहाँ पे ख़त्म होते हैं। a letter is an object। suppose he plays, so he plays, जब मैं बोलूँगा he plays in a ground, so in a ground becomes here an object और ground becomes here an object because an action passes on an object। action जो है वो पास हो जाती है ऑब्जेक्ट पर। I teach you English, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। so I is subject, teach is a verb and I teach you English, English जो है ये ऑब्जेक्ट है। so it action passes on an object, action जो है ये पास होती है ऑब्जेक्ट। intransitive क्या होता है? intransitive is that type of sentence, is that type of verb which does not pass, in which action does not pass on an object, or which is not, where we find that there is not necessary to pass an information on an object, or to yes, like that dog barks, dog is subject, barks is a verb, right? so there is not necessary to pass an information on an object, जहाँ पे action pass object पे नहीं होती है। he plays, वो खेलता है। so ये जो होते हैं ये होते हैं intransitive। और जो without object होते हैं या without taking prepositions or something like after a verb। समझ आ रही बात? ओके, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद मैंने बात की है ऑक्सिलरी, जो इधर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझने के लिए। ऑक्सिलरी, व्हाट डज ऑक्सिलरी मीन? ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग।
So there are two kinds of auxiliary. One is known as primary auxiliary and second are known as modal. पहले हम primary की बात करते हैं. अगर हम primary में देखेंगे ना, primary में भी आप तीन main auxiliary verbs है, या हम उनको कहते हैं chief auxiliaries या principal auxiliaries इनको, जैसे be, do and have. ये जो है be, do, have, इनके families भी फिर इसके बाद निकलते हैं, इनके forms भी निकलते हैं बाद में. Like अगर हम be देखेंगे, इसका is, am, आर, वाज, वर, बीइंग, ये सारे जो है ये बी के असल में फॉर्म्स है, ये बी की फैमिली है. जैसे हम बोलते हैं वैसे हैव का है हैज़, हैड है, तो ये इसकी फैमिली है, ये इसके फॉर्म्स है किसके हैव के. फिर वैसे बी हो गया, हैव हो गया, डू. अब डू जो है इसका डिड है, इसका डज है, ये इसके क्या है फॉर्म्स है इसके. सो एक्चुअली देयर आर थ्री principal auxiliaries. There are three main verbs that presents in auxiliary. We call them principal auxiliaries, principal verbs or main verbs such as be, do and have. And rest जो इनकी members forms निकलते हैं या इनकी families जो होते हैं वो इसी से निकलते हैं. ठीक है, ये होता है सारा. We have seen these auxiliaries, we have seen these forms earlier in tenses. हमने ये सारा देखा है, is, am, are, was, were. Everything we have seen in the tenses, हमने वो देखे हैं. If you have not watched such video, you can move towards there and you can watch them, frankly. आप अच्छे से देख सकते हो उनको. Okay, let's come to the next. Then उसके बाद मैंने क्या बोला है, modals है दूसरा. प्राइमरी में आया यही बी, डू, हैव, ये प्रिंसिपल है, मैंने फिर इसकी फैमिलीज निकालते हैं. फिर इसका दूसरा बोला जाता है मॉडल. मॉडल्स में बोले जाते हैं इंग्लिश, इट इज रिटन इन इंग्लिश ग्रामर 13, देयर आर 13 मॉडल सच एज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड. ये सारे ये हम भी इसके बाद भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे जो वर्ब्स में बात कर रहा हूँ इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी किधर, इधर. ठीक है, तो ये असल में या प्राइमरी ऑक्सिलरीज या मेन हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं. These also are necessary to understand the voice. ठीक है, अब voice पे voice बोला जाता है. voice is a form of verb which shows that when the subject acts, जब subject जो है ना act करता है तो उस वक्त उस statement को, उस voice को बोला जाता है active voice. When subject acts and that statement, that voice is considered, that voice is said to be an active voice. उस voice को हम बोले जाते हैं active voice. ये एग्जाम्पल से हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं फिर आगे. अच्छा, active voice की फिर से बात करें. active voice means when subject acts, जब subject act करता है तो उस वक्त क्या होता है, active voice हो जाता है. मिसाल के तौर पर subject जो होता है act, subject कौन होता है, doer, यानी कि काम करने वाला, worker, जिसको हम अल्टरनेटिव नेम देते हैं. मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखते हैं. अमान प्लेस अ गेम. अमान जो है ये सब्जेक्ट है, क्यों खेल कौन रहा है, अमान. तो हेयर सब्जेक्ट एक्टर्स, हेयर अमान एक्टर्स. सो इन अदर वे वी से सिट्रस गोज ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो सिट्रस होता है, जो एम्फेसिस है, वो किस पे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पे. समझ आ रही बात. ओके, फिर से देखिए. अमान राइट्स अ लेटर. अमान चिट्ठी लिख रहा है. सो व्हेन वी दिस सेंटेंस कॉल्स एन एक्टिव वॉइस. व्हाई? बिकॉज हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये एक्ट करता है. व्हेन सब्जेक्ट एक्ट्स, दिस द वॉइस कैन बी कंसिडर्ड, द वॉइस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. जब सब्जेक्ट एक्ट करता है उसी वक्त इस वॉइस को कहा जाता है कि ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है, वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स आफ्टर दैट. हम इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं. होप कि आपको ये एक्टिव वॉइस समझ आ रहा है. उसके बाद पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस सिंपली मीन्स व्हेन द सेम सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन. जब इस पे एक्ट किया जाता है तो ये होता है पैसिव वॉइस. द वॉइस इज टू बी साइड टू बी पैसिव वॉइस. मिसाल मैंने यहाँ बोला था एक्टिव वॉइस में अमान राइट्स अ लेटर. अब जब हम इसी एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, इसी एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस, वी से लाइक दिस. मैंने क्या बोला, अमान प्लेज अ गेम. अब गेम is played by Aman, a game. So here in another way we say in active voice the citrus goes on and what subject. यहाँ पे जो I mean से citrus जो है, emphasis जो है, जोर है, वो किस पे पड़ता था, सब्जेक्ट पर पहले. ठीक, अमान पर पड़ता था, अमान राइटस इस पर पड़ता था. जब हम इधर बात करते हैं पैसिव वॉइस में, वहाँ पे जो सिट्रस है, वहाँ पे जो जोर है, वहाँ पे जो एम्फेसिस है, वो किस पे पड़ता है, वो पड़ता है ऑब्जेक्ट पर. ठीक है, a letter, a game is played, a game is played sorry, a game is played by Aman. एक गेम को खेला जाता है किससे, अमान से. और एक चीज इसमें जो है, इसमें एक प्रीपोजिशन कैरी करता है बाय. वो क्या, वो सब्जेक्ट से पहले. जब हम पैसिव वॉइस की बात कह रहा हूँ, इन द पैसिव वॉइस वी आल्सो यूज प्रीपोजिशन दैट इज
taken, that is used before the what subject when we change active voice into the passive voice. समझ आ रही बात? ओके अब इसमें जो मतलब एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस स्टेटमेंट ज़्यादातर मतलब अक्सर हम कौन से इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस को चेंज करने में पेसिव वॉइस में? आपको देखना होगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है, फिर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सारे जो टेंसेस मैंने इधर बताए, प्रेजेंट सिंपल याद रखना है, प्रेजेंट जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आप बताइए, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों। इसमें कौन रह गया जो चेंज नहीं होता है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दैट does not admit in passive voice, that does not change in passive voice। अगर उसमें आपको एक्टिव वॉइस मिलेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते पेसिव वॉइस में, समझ? ओके फिर उसके बाद क्या मैंने बोला, अच्छा ये हो गया प्रेजेंट टेंस का, फिर पास्ट का, पास्ट टेंस के भी ही पास्ट सिंपल या जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा, पास्ट परफेक्ट, ये तीनों हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो सेंटेंसेस हम पाएंगे इनको हम चेंज कर सकते हैं किसमें? पेसिव वॉइस में। अच्छा अब इसमें भी एक रह गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी कांट चेंज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट को चेंज कर सकते हैं पेसिव वॉइस। अच्छा अब इसमें कौन नहीं चेंज होता? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज, और दैट डज नॉट एडमिट पेसिव वॉइस व्हेन वी सी सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। अब nutshell में हम कहेंगे there are 4 expressions that we can't change them in the passive voice, such as present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous, no change। समझ आ रही बात? सो ये वीडियो जो है ये लंबा हो सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। आपके भी जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है या जहाँ पे भी आपका डाउट लगेगा इंशाल्लाह यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो आई विल फर्स्ट रब इट, होप कि ये अंडरस्टैंड हुआ। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट एवरीथिंग इन इंग्लिश so that we will so that you will boost your language. Now today's topic is voice. As I earlier told you, before understanding the voice it is necessary that we should understand verb. What does verb mean? Verb is a word which expresses some action, feelings, existence and state of being. This is the right definition of a verb. Where you can commit it where I have taken these examples or taken these definitions. I consult English grammar and composition which is written by R.L. Basoor. It is one of the authentic English grammar which circulates throughout the in the market. Okay, दूसरा I use it to study English grammar, that is Arihan publications, and which is it's I think it's written by someone else and Martin. I mean, and these are the English grammars I consult. After that I give you lectures. Okay, so I told you about it's the verb. What does verb mean? Verb is a word which expresses some actions, feelings, existence and state of a being. For example, I say he writes a letter, he plays a game. So this is the word in which we find out verb that states something that expresses action, like he writes a letter, he plays a game, play, writes, these action words. He sleeps under a tree. State of being, he says he likes to meet his friend. A state of being, like is also a verb but it's state of being. So these are the feelings that are also expressed by the by the verb. So it is a definition of verb. Then I told you about there are 2 kinds of verb. One is known as finite and second is an infinite, or we can also call it non-finite. Okay, what does finite mean? When the verb is limited by the subject or when the verb is limited by the number, at that time we can call it's a finite. So for example, I say he writes a letter. There is someone particular who writes a letter. So when the verb writes, a verb is being limited by the subject, at that time we call it what? We call it a finite. So then there is what? Infinite or non-finite. The name itself indicates which does not stop, or which is not limited by the subject or by the number. At that time we can call that what? Non-finite. Then there are these finite and non-finite further divided in subordinate. Like in the finite we see that is very important for us to understand. One is transitive verb, second is intransitive, and the third one is auxiliary. And what does transitive mean? Transitive means when the action passes on an object, or we say there are 3 things that remains in the transitive verb: subject, verb and object. So when a subject does an action, that action passes on an object. So example, Aman
plays a game. Aman is a subject. Plays is a what? Verb. So Aman plays. When I say a game, so the action passes on an object. And here, listener or the person to whom he or she is going to express, the listener understands. Action passes on an object. Suppose if I say he plays, the listener will not understand what he actually plays. There are a number of games. When I say he plays a game, he plays cricket, he plays badminton, it indicates action passes on an object. It is easy to understand. Okay, when we talk about what intransitive verb is that in which action does not pass an object. That means that's called intransitive verb. Now come to the auxiliary. This is the third subordinate of finite. As I earlier told you, auxiliary, these are the different names which auxiliary means, which is also called helping verbs or special verbs or assistant verbs. There are two kinds of auxiliaries. One is known as primary auxiliaries and second is known as modals. In primary auxiliaries, these are further divided in subordinates. Like there are three main auxiliaries. There are three principal auxiliaries. What are those? Actually, they are be, do, and have. These are the main auxiliaries. These are the principal auxiliaries. After that, rest of the forms comes from these verbs such as be, do, and have. For example, I say be. Be is a primary auxiliary. Be is a main verb. Be is a principal verb. And rest like is, am, are, was. These are the forms which comes out from the be. Are you getting? It's easy to understand. Then there is do. And this is the principal verb. This is the main verb. I'm not talking about do. Then this do, we see its forms like does, like did. These verbs, these auxiliaries, these helping forms are also coming from these main verbs, these principal verbs. I'm just talking about what? Auxiliaries, which are divided into two. One is primary, second is, first we are discussing what? Primary auxiliaries. Be, do, and have. Have, like we see has, had. Okay, these are the forms of have. So be, do, and have. Then its family or its forms can be considered as what? Primary auxiliaries. Then we have modals. That's very important for us to tell us about the mood, to tell us about the manner, to tell us about the mood of a subject, about mood of the speaker, how he or speaks. It depends upon the circumstance. It depends upon the situation. Do you want to express politeness? Do you want to give order? Do you want to give suggestion? Do you want to give command? It depends upon everything. It is decided by the models. When I am going to teach you this model, what? Can, could, may, might, will, would, shall, should. These use it to art. Everything I will tell you about these models. These models are up to mood, up to circumstances, up to situation of a speaker. So it tells us about the behavior of the speaker. It tells us about the way in which he or she expresses. So it depends upon the circumstances. It depends upon the situation. I'm talking about the models. Now, why I express these things? Because these things help us while we change voice, active voice into the passive voice. So come to the point, voice. What does voice mean? Voice is a form of verb in which we see the active voice and the passive voice. When the subject acts or the stress goes on subject, and we see how the door works, how the door itself is a worker, and we come to know it is seen to us, and it is seen to the viewers, it's seen to the audience, it is seen to the readers, that we are able to understand when the subject acts at that time, the verb is said to be in the active voice. Then when we talk about the passive voice, similarly here, passive voice means when the subject is acted upon. Or we say here the stress, the emphasis goes on an object. And we also use what? Passive, in the passive voice, we use preposition by before the subject. When we change active voice into the passive voice, at that time generally we use what? Active voice into the passive voice. Okay, one more important thing I told you about earlier, that there are these tenses, there are these expressions that we can change them into the passive voice. Other rest of the sentences in the tenses we can't change them in the passive voice. It is rule, like present simple, present continuous, present perfect, past simple, past continuous, past perfect, future simple, and future perfect. These expressions can be changed into the passive voice. Like we say future present perfect continuous, present perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, and future perfect continuous. These tense expressions cannot be changed into the passive voice. As we say simply, these expression does not admit passive voice. And a basic trick I want to tell you here,
It's a trick, or it's generally a rule how we use it to change active voice into the passive voice. Okay, let me give me a second here to make you understand more. Now see, for example, I've just given an example in the present simple. Example, Aman writes a letter. First of all, you have to understand here that this one is subject, and how you have to how you can change active voice into what? Passive voice. And this sentence is known as an active voice. Here, Aman writes a letter. Here we know the subject actus. He writes. Aman writes a letter. So the citrus goes on and subject. And this one is subject. And this one is verb. But which verb? V1. And this one is what? Object. Right? So when we have to change active voice into the passive voice, we have to understand what? How can we change active voice into the passive voice? It's a rule generally. We have to, what we have to do, that object becomes a subject in the passive voice. When we have to change active voice into the passive voice, object becomes subject and subject becomes object. And which form of verb is used in active voice? That will always change into third form of verb. It's rule number first. Is again I will repeat it. जब भी हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, उस वक्त सब्जेक्ट जो होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट यानी कि ये चेंज जगह तब्दील करता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट की जगह लेता है। और जो भी फॉर्म, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल में V1 लगती है, बट अगर सेकंड लगती है, थर्ड लगती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ लगती है किस में? एक्टिव वॉइस में, दैट ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ verb. ये rule है. Okay, let me tell you in English. Okay, when we have to change active voice into the passive voice, its rules generally we can change active voice into the passive voice like this. A subject becomes an object and object becomes an subject, and which form of verb is used in the active voice? That will always convert into the third form of verb. वो हमेशा third form बन जाएगी. Now here when I'm going to change the active voice into the passive voice, जब मैं चेंज करूंगा एक्टिव वॉइस को किस में? पैसिव वॉइस में, उस वक्त क्या मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है अगर ये एक्सप्रेशन है ये किस में है। मुझे समझ आ रही, जब मैंने देखा कि ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो जब मैं प्रेजेंट सिंपल में इसको चेंज करने वाला हूं उस वक्त मुझे 3 ऑक्सिलरीज हैं, इज, एम, आर। ये टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये जो इज, एम, आर हैं दीज वर ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब भी मैं चेंज करूंगा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, मैंने पहले देखना है कि ये किस एक्सप्रेशन में है, प्रेजेंट सिंपल में, उस वक्त मुझे ये ऑक्सिलरीज वर्ब लेने हैं ताकि मैं इसको चेंज करूँ पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं ए लेटर, क्योंकि मैंने अभी बोला व्हाट? ऑब्जेक्ट बिकम अ सब्जेक्ट। नाउ आई टोल्ड हियर द सिट्रस गोज एज एन ऑब्जेक्ट। ये असल में ऑब्जेक्ट किसका है? एक्टिव वॉइस का, बट हियर इट बिकम्स अ सब्जेक्ट, राइट? अच्छा, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आता है, बट इट्स नॉट एक्चुअली द सब्जेक्ट। ठीक, ए लेटर इज अ सिंगुलर, सो आई यूज इज। If singular subject is singular, is used. If subject is plural, or is used, and I always use it with am. A letter is written third form, क्योंकि अभी बोला जो भी एक्टिव वॉइस में होगी फॉर्म, चाहे फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, इट विल ऑलवेज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा थर्ड फॉर्म में वो चेंज होगा। ए लेटर इज रिटन बाय भी इस्तेमाल होगा, क्यों? एज अ प्रीपोजिशन इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाय अमान। अच्छा, ये क्यों जरूरत है मतलब ये बोलना? अगर हम orally, what is the actually as I understood, you can express your thoughts, your views. As I understood, active voice here, when we are speaking to the person, rest of the people who are surrounded us, they can understand to whom we are talking about, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। But when we generally talk about the passive voice, if we don't use by as a preposition, it means we are not mentioning the name to whom we are talking about. It remains a secret. The people who are surround us, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, they will not understand to whom we are talking about. This is the reason that passive voice is used in English. समझ आ रही बात? ओके, मैं कह रहा था, सो ऑब्जेक्ट बिकम्स एन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, एंड व्हिच फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्टिव दैट विल ऑलवेज चेंज टू थर्ड फॉर्म। ए लेटर इज रिटन बाय अमान, सो बाय इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। आज हम यहाँ तक ही अपना टॉपिक फिनिश करते हैं। आगे हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं और ट्रिक्स भी देखेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।